Hello and a very warm welcome to each one of you. And today we are on chapter number 23 from this book, Master Your Emotions. So, this chapter is talking about caring, what people think of you. Let's quickly, hop into the chapter and read about uh, the what does the author have to share on this. Caring what people think of you. Normally speaking, yes, we do care of what people think of us, and that is one of the biggest fears that we have. Let's understand what does the author have to say. How on Caring what people think of you, how on earth can another's thought about you harm you? It is your thought about his thought that harms. Change your thought. So ब्यूटिफुली सेड, राइट? कि हमारे को कैसे हमारे हमारे को क्या ही फर्क पड़ सकता है कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है के बारे में। इट इज ओनली जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, और उसकी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके बारे में हम एक स्टोरी बनाते हैं जिसकी वजह से वी फील हर्ट, विच हार्म्स अस, जो हमारे इमोशंस को ऊपर और नीचे लेके जाता है। एंड दिस गाय Vernon Howard says कि change your thought. Everything at the end of the day comes to the point कि अपने thoughts के ऊपर काम करो, thoughts को change करो. Let's read what does he have to share. Are you overly self-conscious? In this section, I will explain why you care so much, what people think of you, and what you can do to elevate the situation. You're the most important person in the world. First, realize you are the most important person in the world. If you don't believe me, remember the last time you felt intense pain. Perhaps it was toothache or a surgery, or maybe you broke your leg in an accident. What were you thinking back then? Were you concerned about the famine in the Africa? Did you worry about innocent people being killed in wars in the Middle East? No. The only thing you wanted is for the pain to go away. This is because you are the most important person in the world. Since you must live in yourself 24/7, it is normal to be concerned about your own mental and physical well being. You have to realize the same goes for every other human on the planet. For me, you are not the most important person in the world. I am. And from their perspective, so are your close friends, family members, and colleagues. Because you live with yourself 24/7, you incorrectly assume, often unconsciously, that people think about you significantly more often than they actually do. In fact, for the most part, people do not care about you. While it may be sounding depressing, it is actually liberating. It means you don't have to worry so much what people think of you. कितना प्यारी बात करी है, राइट? अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए, अगर हमारे को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हमारे को इवन छोटी सी भूख लग जाए, हमारे को नाइफ से कट लग जाए, हम किसके बारे में कंसर्न होंगे? हम नहीं सोच रहे होंगे कि वो बेचारा कितना दुखी है, वो कितना सुखी है, वॉट एवर। ऑल वी विल बी कंसर्न अबाउट इट कि हमारा ये ठीक कैसे हो जाएगा वुंड, या हमारी भूख कैसे मिट जाएगी, या हमारे को जो चोट लग गई है, हमारा एक्सीडेंट हो गया, वो हम कैसे रिवर्ट कर सकते हैं। As the famous saying goes on, when you are 20, you care what everyone thinks. When you are 40, you stop caring what everyone thinks. And when you are 60, you realize no one was ever thinking about you in the first place. I give a very beautiful example in my, sessions ki how we think ki हर कोई मुझी को देख रहा है when we enter a room. How we dress up so much not to impress ourselves, not to make ourselves feel good. In fact, तो जब हम तैयार हो रहे थे, we are feeling bad कि हाय राम, इतना ताम कर, इतना सब मेकअप करना पड़ रहा है, इतनी ज्वेलरी पहननी पड़ रही है, ये साड़ी अनकंफर्टेबल है, मुझको पहननी पड़ रही है, बट वाई आर वी वेयरिंग इट? क्योंकि जब लोग मुझे देखेंगे तो पीपल विल से वाओ, ये तो बहुत सुंदर है, दिस लुक्स एक्सपेंसिव, दिस इज ब्यूटिफुल.
बट इज दैट रियली व्हाट एवरीबडी इज डूइंग? कि हर कोई अपनी ही रेस में अपने आप के साथ ही ये बात कन्वर्सेशन कर रहा है कि यार मैं अच्छी लगनी चाहिए, मैं अच्छी लगनी चाहिए, मैं सबसे अच्छी लगनी चाहिए। शादी में हम सब बहुत अच्छा अच्छा तैयार होके जाते हैं, राइट? While you keep track on all your mistakes and awkward moments, nobody else does. People are simply too busy worrying about themselves. In short, people don't keep track of your past failures. Read everything you post on social media. Remember your awkward moments. Think of you very often or care about you as much as you care about yourself. Even a mother भी ना, that is a very harsh truth, but cannot love her child as much as she loves herself. Balwan, not everybody will love you. This is also another thing. You care what other people think of you because you want them to approve of you. You assume the best way to do that is to avoid making waves. As a result, you may spend your whole life trying to be the perfect person, hoping to be loved. कैसे बच्चों को देखा है ना, बच्चे अपनी मम्मी पापा से एप्रिसिएशन चाहने के लिए, एप्रिसिएशन सीख करने के लिए, हाउ दे डू स्वीट स्वीट गुडी गुडी थिंग्स, दैट इज व्हाट वी ऑल डू एज वेल, जस्ट सो दैट somebody approves of us, just so that somebody is impressed by us, just thinking कि क्या पता कोई मुझे प्यार कर दे, कोई मुझको पसंद कर ले. However, it usually doesn't work. No matter how great you are, some people won't like you. हमने देखा ही होगा ना, हम अपने किसी फ्रेंड के साथ एक्सट्रीमली अच्छे भी हैं ना, तब भी वो आपको नहीं पसंद कर रहे तो नहीं ही करने वाले. You may try to fix the image people have of you, but that won't work either. People will still see you the way they want to because of their own values and beliefs. This is a bulb on for me. क्योंकि हमने अपने दिमाग में पहले से ही परसीव कर लिया होता है कि दिस इज हाउ दिस पर्सन इज, as per my beliefs, as per my values. अब अगर just for example, if my value system says that family comes first, and if I see somebody who is constantly 100% dedicated towards her business, I might not like that person. I'm like, यार उस अपनी फैमिली तो छोड़ छाड़ के बैठी है. No matter what she does, maybe I won't like her. Although मेरे को ऐसे जजमेंट आते नहीं है एनी मोर. I might have been like this 5 years down the line, but not anymore because I feel that yes, everybody has their own choice. मेरी अपनी वैल्यू सिस्टम है बिकॉज अब पता चल गया है कि मेरा अपना बिलीफ सिस्टम है, मेरा अपना वैल्यू सिस्टम है, एंड आई एम मैरिड टू दैट ओनली, एंड मैं वो ही अपने आप के साथ करने वाली हूँ. एंड लाइक वाइज जैसे मेरा है वैसे ही हर किसी का भी है. But people who are still on this journey, they will realize कि हाँ, they have some set values and beliefs, and वो उन वैल्यूज एंड बिलीव्स को और कोई जो एक्चुअली में थोड़ा सा उनकी लाइफ में भी वो प्रायोरिटीज होते हैं, वो उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं देन अदर पीपल. Thus, if you base your self-worth on what people think of you, you will always be at the mercy of the approval of others. What will happen if they suddenly disapprove of you? Unfortunately, no amount of external approval will compensate of the lack of self-approval. You have to start approving yourself. You have to be okay with your authentic self. You got to know yourself better and show up on your best authentic self. By trying so hard to be loved by everybody, you risk living a dull life in which you are unable to express your own personality. You will end up mimicking your friends, pleasing everybody around you, but forgetting to please the most important person in the world, that is you. How we feel so depleted after meeting some people because हमारे को उनके साथ सिर्फ गुडी गुडी ही होना होता है. How
हम अपने थॉट्स को शेयर ही नहीं कर पाते बिकॉज we think that my thoughts might be wrong. Maybe my understanding of XYZ context is not as good as the person sitting in front of me. तो उनकी हाँ में हाँ मिलाना is much easier than giving my own thought and thinking कि अब ये मेरे पे हंसेगा. What people think of you is none of your business. कहते हैं ना, अगर लोग जो आपके बारे में सोच रहे हैं, अगर आप उसकी भी चिंता आप करोगे तो लोग क्या करेंगे? बेचारों का काम क्यों उनसे छीन रहे हो यार? You are not responsible for people's thoughts. In fact, what people think of you is none of your business. Your job is to express your personality the best way you can while having the purest intent possible. In short, your responsibility is to do your best to be your true self. Then people may or may not like you, and either way is fine. Remember, the most influential people, such as presidents and statesmen and women, countries are often hated by millions. हमने तो बहुत लोगों को देखा है इंडिया में, तो एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, इन्फ्लुएंसर्स को, सबको ट्रोल मिलता है, राइट? तो व्हाट इज द बिग डील इफ पीपल डोंट लाइक यू? इफ ऑल पीपल डू नॉट लाइक यू, कुछ तो हमेशा ही लाइक करते होते हैं. नो मैटर मैं कितनी अच्छी हो जाऊं, कितनी प्यारी प्यारी बातें कर लूं, देयर विल बी सर्टेन पीपल हु विल ऑलवेज हेट मी, एंड दैट्स ओके ना. देयर विल बी सर्टेन पीपल हु विल फील कि यार ये तो बड़ी मक्खनबाज है. देयर विल बी सर्टेन पीपल हु विल से कि यार क्या बना बना के बोलती है. I don't know what people think of me, and I'm not concerned about it because people who will love me, who will like me, will be sitting in this session and listening to me, right? मैं किसी को खींचे तो नहीं लेके आ सकती ना. Therefore, don't make it your personal mission to change people's image of you. People are entitled to their beliefs and values, and they have the right to dislike you. They are free to interpret your actions and behaviors through their own filters. Part of your personal growth is to accept you don't have to be liked by everybody. Part of your personal growth is to accept you don't have to to be liked by everybody, and finally you can be yourself, and that will be actually so liberating अगर आपको पता ही चल जाए. So for example, my youngest one, she always wears pajamas, loose t-shirts. denim पहन लेगी तो उसके साथ loose t-shirt पहन लेगी. अगर fitting वाली t-shirt पहन लेगी तो she will have a loose pajamas. She does something weird. She not I would not say weird, but she dresses in her own way, and I have never corrected her on any of it because I have my own styling thing. The eldest one has her own, the middle one has her own, and this youngest one is also doing whatever she is liking to. She is expressing her own self the best way possible that she would like to, right? And I went to my mom's place yesterday, and today in the morning only she was telling me, ये कैसे कपड़े पहनती है ना, इसको समझाती नहीं है तू. And I'm like, नहीं, उसकी मर्जी. शी इज शोइंग हर पर्सनालिटी एंड इट्स ओके ना कि अगर उसको वैसा पसंद है. शी माइट इवॉल्व, शी माइट चेंज, शी माइट डू वॉट एवर, बट लेट हर बी. There are some decisions that I would love for my kids to take themselves. I don't want them to be spoon fed by me all the time. And since childhood, when she was going to her playway, I used to open the almirah for her to choose whatever she wants to wear. और बढ़िया बताती हूँ, my brother's daughter, what she does, she wears one color shoe in one toe and the other color shoe in other toe. And then what happens? He also allows her to do that way. It's okay. They're kids. Let them explore the world themselves. Let them understand things themselves. It's okay, right? How does it matter? Unless and until you yourself are making yourself happy, everything is fair. Be your authentic self. How to use this emotion to grow? Being overly self-conscious means you have a distorted view of the way people perceive you, and you are attached to self-image you want to protect. To stop being self-conscious, you must address these 2 points. Number 1, change your interpretation of the way people perceive you.
To care less about what people think of you, it is essential for you to redefine your relationship with yourself. This entails realizing that in general, people don't care about you and you don't care about people. Uh, I have a mentor who was telling that she had gone to US and you know she was doing some course in US with this trainer, and the trainer gave her a task that she's not going to put on lipstick and kajal for one entire 1 week. And she was like, no, this is not possible. Why? Because when I put on kajal, I look awake, and when I put on lipstick, I look charismatic, and people know me that way. What people will think that there is something wrong with me the moment I do that. And that is what happened. She went to her, she had a playway, and she went there, and people were like, are you okay, is everything fine, this and that. And then she went back to her trainer and she told him that, this is how people were talking to me and they were feeling this. And the trainer told her to, even if you have no makeup on, you should have the energy which tells that you are absolutely fine. uh, why don't you show up yourself in such energy? And next day, she was like, okay, fine, she will try. And she was normally, if she was on this energy, while she was not putting her makeup and everything, she was operating from this higher energy, double the height of the energy that she could portray. And people were like, wow. And then nobody cared about the makeup. Your energy is more important, I believe. And this is a beautiful example. But let's understand what is the exercise that the author is sharing with us. Realizing people don't care. Well, कहीं कहीं पे जहाँ पे आप मे बी द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट हो गए, या कहाँ पे जहाँ पे एक्चुअली योर इंटरेक्शन इज टू मच विद द पीपल, पीपल माइट आस्क यू फॉर सर्टेन थिंग्स, कि क्या हो गया, व्हाई आर यू लुकिंग सो डल, व्हाट इज रॉन्ग, दिस एंड दैट. But you need to realize within yourself that real people don't actually care. This exercise will help you understand at deep level, most people are not really concerned about you. Choose one person you know. It might be a friend, an acquaintance, or a colleague. Ask yourself how often you think about that person in your daily life. So जो आपके क्लोज पीपल होंगे, दे माइट बी थिंकिंग, अब आप किसी वेडिंग पे जा रहे हो, आप इतना सारा तैयार शेयर होके जा रहे हो, जस्ट थिंक अबाउट इट. व्हाइल यू आर बिकमिंग अनकंफर्टेबल, यू आर नॉट लाइकिंग इट, right? There are times when you love dressing up, when you love putting on makeup, then that's fine. But if you're doing it to impress people, then you have to think about it कि XYZ person जो आपको शादी में मिलने वाला है, do you actually think about that person? If not, then why are you putting so much thought about caring about what that person will be thinking about you? Ask yourself, how often do you think about the person in your daily life? Now, put yourself in the shoes of that person. How much do you imagine he or she thinks about you during an average day? How much does he or she keeps track of what you do or say? What do you think he or she is worrying about you right now? Hi, Madhulika. Thank you for joining in. How are you? Hi, Karishma. Good afternoon. Yeah, I'm good. Thank you. Great. So this chapter, How are you? I'm wonderful. Wonderful. This chapter that we are reading is about caring what people think of you and how can we shift that. So now we are reading about how we can, shift this thing. So first point is change your interpretation of the way people perceive you. So we have to understand that it is first of all not our responsibility to think about what people are thinking about us. Agar ye wala example, the exercise that author has shared with us is such a beautiful exercise that agar aap kisi ek person ko bhi choose kar lo, for example, even if I think of you, right? तो मैं अपने आप को अगर पूछूं कि करिश्मा, हाउ मच डू यू थिंक ऑफ मधुलिका इन अ डे, इज इट अ लॉट? नहीं. अगर मैं ही अपने आप को मधुलिका के पैर में डाल लू, शूज में डाल लू, हाउ मच मधुलिका थिंक्स ऑफ करिश्मा? नॉट मच. ठीक है, एक बार दिमाग में आता होगा, अच्छा उससे मैसेज आया है, ओ अच्छा बुक रीडिंग क्लब है, दैट्स इट.
राइट एंड अभी मैं ये सोच सोच के परेशान होती रहूंगी आई हैव टू शो अप लाइक दिस एंड लाइक दैट एंड यू नो so I don't know what Madhulika will be thinking about me, and my emotions are going up and down because of that. It's not my job, my responsibility to, think about what does Madhulika think about me. So this is the exercise that he has shared, that is realizing people don't care. This exercise will help you understand at a deep level, most people are not really concerned about you. So the first step is to choose one person you know. It might be a friend, an acquaintance, or a colleague. Then ask yourself how often you think of that about that person in your daily life. Then once you have done that, then now put yourself in the shoes of that person. How much do you imagine he or she thinks about you during an average day? How much does he or she keep track of what do you say or do? What do you think he or she is worrying about right now? Repeat this process with at least two more people. So अगर हम देखें, चलो we are coming from the same industry, the self development coaching, तो हम we might be interested in कि चल देख लेती हूँ क्या पोस्ट कर रही है, क्या कर रही है, what is she saying. But just imagine कि मेरी कोई cousin है XYZ. How much would she be thinking when she's going on a job, she's doing her thing, she has her own family. अब मैं ये सोचती रहूँ कि यार ये वाली फोटो के अंदर वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, how does it really matter? I don't even know कि वो देख भी रही होगी कि नहीं. And we keep on thinking कि हाय मेरे को तो अपना बेस्ट ही करना है. And we feel bad when we think कि हाय ये तो मेरे बारे में गंदा ही सोचती होगी. यार क्या फर्क ही पड़ रहा है यार. As you do this exercise, you will probably realize other people are simply too busy to think of you often. After all, they live with themselves 24/7. In their own eyes, they are the most important person in the world, not you. And this is only to be expected. Even for us, we are the most important persons in our lives. मैं तो ये कभी कभी अगर मैं इस थॉट के ऊपर चलना शुरू करूँ तो आई बिलीव कि हाँ शायद हमारे बच्चे भी हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जितने हम खुद ही अपने लिए. कहीं पे आग लग जाएगी, हम अपने बच्चे को लेके भागेंगे जरूर, पर हमारे को कंसर्न ये भी होगा कि मेरे पे भी ना आग लग जाए. एक्सीडेंट होगा, हम अपने बच्चे को पकड़ेंगे जरूर, पर अपनी भी चिंता साथ में करेंगे कि भैया मैं तो ठीक होनी बहुत जरूरी हूँ, क्योंकि अगर मैं ठीक नहीं होगी तो मेरे बच्चे की केयर कौन करेगा. राइट. Right. Then there is exercise number 2, which is saying realizes you do not care. You are not concerned about other people's lives either. The following exercise will make you realize this. Go through your day and try to remember all the people you met or interacted with. It might be a waitress or a customers in the restaurant you launched in, नहीं, the people you saw on the street and so on. Or maybe जहाँ शादियों में हम इतना सज धज के जाते हैं वहां पे हजारों लोग, right? And ask yourself how much you thought about these people prior to this exercise. You probably didn't think of them at all, did you? As you can see, you don't really have time to worry about other people. Most of the time, you are concerned only about yourself. It's not to say you have no compassion or you are selfish jerk. You are merely a human being. You are being human. और हम लोगों की सबकी लाइफ में इतनी बिजी है, unless and until we poke somebody, nobody is going to remember you. How they say, जो दिखता है वही बिकता है. जो दिखता है, आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट, ऐसे थोड़ी ना बोलते होंगे कि जो जो हमारे को इंस्टाग्राम में दिखते रहते हैं लोग, बार बार हमारी फीड्स पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हमको उनके बारे में पता है, वी रिमेम्बर देम. अदर्स इतने सारे, Hmm. कितने फॉलोअर्स है आपके, हाउ मेनी पीपल आर यू फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम, डू यू नो ऑल ऑफ देम? नहीं. At last, the author says, stop being overly attached to self-image. If you are overly self-conscious, chances are you worry too much about the way people perceive you. Perhaps you want their approval or are afraid they will judge you. It is essential you learn to let go of your self-image. And now, what is this exercise of letting go of your self-image? Write down all the things you're afraid of
to be judged on. Maybe you worry about your looks, or you are afraid of saying something silly. So for me, it was for a very long time that I would not engage into any discussions. Reason being, I thought that whatever I am thinking might be wrong. क्या पता ना, मेरे को जो समझ में आ रहा है वो ठीक है ही नहीं, वो तो उल्टा ही समझ में आ रहा है. But this book reading club helped me a lot doing that. I got my own voice through this. Whatever I feel, I say, and I don't know whether people understand it or not, whether they approve of it or not, whether they agree with it or not. At least I have started saying what I feel, and touch wood, I realize that I am actually on the right track. It's not that wrong that I think. So self-image there was, had a this thing. Now write down why you care. What is the issue here? What image are you trying to protect? Do people believe you are smart and you are afraid you can't live up to this image? I had this one. You are afraid of being rejected as a result of saying something wrong. For me, I felt that everybody thinks that Karishma को तो बहुत आता है. She's very confident, this and that. And I felt कि यार अगर मैं गलत बोल दूंगी, they will say ये ले. हम सोचते थे ये समझदार है, इसको भी नहीं समझ में आता है. Yes. अभी I've stopped caring. I have realized that it's best to be your authentic self, and that is the best way to learn and evolve and be a better version of yourself. क्योंकि कुछ बोलूंगी, कुछ किसी को सामने वाले को नहीं समझ में आएगा, गलत लगेगा, तो they will talk it back, and then I will realize कि अच्छा ठीक है, this is the way I can tweak it, or maybe this is a better version of what I am thinking, and I can inherit it, right? I can learn from it. This exercise will bring awareness to the things you are worrying about and will help you address them. In addition, don't forget to complete the exercises mentioned in the section letting go of your emotions. Finally, remember, people will always interpret your words and actions based on their values and beliefs. Therefore, to let your personality shine, you have no choice but to allow them to see you whatever way they wish to. And there is this the exercise at the back of the book. If you have it, you can choose to do it. Yes, this is very true कि हमारी जो core values होती है, हमारी जो beliefs होते हैं, उसके through हम लोग operate करते हैं. And while you were not in the session, I was sharing Madhulika कि हम लोग कैसे, अगर मेरा family is my core value, तो I will be liking more people who have the core value as family, or maybe family is somewhere सबसे नीचे नहीं पर मिडिल में या थोड़ा अपर उसमें उनकी फैमिली होगी, तो आई वुड लाइक दैट दोस पीपल मोर, राइट? एंड पीपल हु विल ऐसे ही, जो भी हमारी कोर वैल्यूज, वी आर मैरिड टू अवर कोर वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम, एंड वी जनरली जेल अप विद दोस पीपल हु आर एट द सेम, वो फ्रीक्वेंसी भी हम कहते हैं ना, सेम फ्रीक्वेंसी वाले अट्रैक्ट ईच अदर. दैट इज व्हाट इट इज, राइट? कि कोर वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे एक दो है तो वो मैच कर जाते हैं. I would love for you to share what you have in your head. मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं करिश्मा, so it will be difficult for me to be on the context, on the right context to set it. But yes, uh, अगर हम भी ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे. I mean that sums up to that in this chapter. Yes. That this is none of my job, and courage to be disliked also. The book always said this is not your job. What is your job and what is not your job? So when you are able to differentiate between the two, life becomes sorted and life becomes easy, because you have less of clashes. I'm having less of clashes in my teenage because now I know his studies is not my job. I just tell him. Otherwise, it is not my responsibility. It is not my job. Do whatever you want to do. He'll come back. Everyone does. I mean, sooner or later, he has to study. So he will do it on his own. So, I mean, now I don't poke my nose into it. No micromanagement, nothing. I've left it after reading that book. Wow. And the same thing over here, caring what people think of you. It doesn't matter anything, because we also don't care much about what people are doing, how they are looking.
So it is We vice are versa. mostly As we are busy, they are also concerned busy in about their our life. immediate family only. अभी अगर वो भी छोड़ देंगे तो Hmm. कितनी लिबरेटिंग लाइफ हो जाएगी ना, क्या है यार, जो करना है करो. Yesterday only I visited my mom. I have shared it in this, earlier in this video only. कि आई वेंट टू माई मॉम एंड माई मॉम वाज टुडे इन द मॉर्निंग टेलिंग मी कि यार ये नूर कैसे कपड़े पहनती है, तो उसको कुछ बोलती नहीं है, इतनी खुली खुली सी, बिकॉज शी हैज बीन अ पर्सन हु ऑलवेज वेयर फिटेड क्लोथ्स. नाउ माय यंगेस्ट वन, शी वेयर्स ऑलवेज लूज लूज वाले कपड़े, एंड शी से कैसे कपड़े पहनती है, जल्दी सी बन के आती है. मैंने कहा मम्मी, मैंने उसको बचपन से ना, when she was going to the kindergarten, I have opened the almirah for her to choose her clothes herself. It's okay. Now my brother's daughter also does the same thing. She wears pink wala floaters in one and blue juta in other shoe. मेरे को तो दोनों पहनने हैं, तो एक पैर में एक पहन जाऊंगी, दूसरे में दूसरा पहन जाऊंगी, and she goes to her play day. And my mama is like, ये क्या करते हो तुम, बोलते क्यों नहीं अपने बच्चे को? And my brother is like, it's okay, she will learn it on her own. She will understand when she goes to school कि सब बच्चे तो मैचिंग मैचिंग पहन के आ रहे हैं, why am I wearing something different? And even if she likes it that way, what is the big Right. deal? And my middle one was telling, Nani, it is a fashion nowadays to wear different shoes and different shoes. You go to big brands, you will see they have the same shoe but of different styles. They will pair it and they will sell it off, and they're too expensive to buy as well. So mummy is They're like, too "Hey, expensive, naam." right? जैसे फटी हुई जीन्स का रिवाज चला है. हाँ एग्जैक्टली. मम्मा इज लाइक, हाँ फटे फटे कपड़े पहनते रहते हैं, एज और आई स्टिल रिमेम्बर दिस, देयर वाज ऑन ज़ारा, देयर वाज दिस टी शर्ट दैट वाज वेरी वायरल ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, बिल्कुल बोरी के बने हुए, और वो भी फटी फटी बोरी के, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक. It's your personal choice, and we all operate from our own belief systems, our own values, our own likings, dislikings, or maybe the way we have been brought up as well comes along. क्योंकि belief system भी वैसे ही That वो. also. Hmm. तो मैं मम्मी को ये नॉर्मली कहती हूँ, मम्मा Right. यू आर सो स्टाइलिश ना, बिकॉज ऑफ दैट ओनली माई किड्स हैव बिकम टू स्टाइलिश. क्योंकि उनको लगता है कि वाह, मेरा स्टाइल बेस्ट है. बिकॉज माई मॉम ऑल्सो थिंक्स दैट वे. All right. Anything that you would like to share, Madhulika? No, nothing much. I have to go through this chapter and then I think I'll be able to. But this is a very nice letting go of your self-image. एक वो है ना, this is the real liberation. Actually, this is the real freedom. When you set yourself free, हम कितने free हो जाएंगे if we set ourselves free from this our self image also. कि नहीं, मैं तो इतनी ही अच्छी होस्ट हूँ, मैं तो इतना ही अच्छा करती हूँ, मैं तो बहुत अच्छी मॉम हूँ. So we'll be free from all that. If we say ठीक है, जो है वो है. I mean, we हाँ. just try to match the parameters. So society driven parameters, we just try to match. Okay, if we are Bahu, so we have to look this way. You have to look that fine, you are coming from good family and all that. So society set parameters पे हम अपनी जिंदगियों को काट देते हैं. बट कल ही मैं वो गाना सुन रही थी, मेरा राम वो कल रात एक चोर आया मेरे घर. हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग? Yes. हाँ. कि तू सब कुछ ले जा, नाम काम राम शाम, मेरे गिले शिकवे दुख सुख, मेरी सोच मेरा अपशरी, सब कुछ ले जा. जो तुझे दिख रहा है वो भी ले जा, जो तुझे नहीं दिख रहा वो भी ले जाओ, और तब मैं आजाद होऊंगा. इट्स सच अ डीप थॉट द सॉन्ग मस्ट हैव रिटन. ब्यूटिफुल. अल्टीमेटली तो सबको आजादी चाहिए ना करिश्मा, प्यारा आत्मा का परमात्मा से मिलन, उसको आजादी चाहिए. आई मीन एवरीवन, एवरीबडी नीड्स फ्रीडम. आज ही बता दें, आज ही अगर ये बोल दिया जाए कि करिश्मा हर सोमवार को सफेद ही कपड़ा पहनना है, यू विल Right. फील बर्डन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ, है ना. चाहे एक छोटी सी ही चीज है, क्या हो गया सोमवार को या मंगलवार को पीला ही पहनना है, तो ऑरेंज ही पहनना है, तो क्या हो गया, पहन ही सकते हैं. बाय चांस सोचना भले ही पड़ेगा. पहन आई लें, तो बट डोंट एज इवन सुन एज वेयर. इट बिकम्स. हम्म. I तो don't even wear orange color. Yellow is like, I don't know if even if I have. अच्छा हाँ, I do have one suit. I have a yellow suit. I'll have to वो think. I don't wear much colors. I wear mostly like white, baby pinks, beige. This is my color tone. This is what I wear mostly. या फिर वही black. अगर
या फिर ब्लैक। तो अगर कोई रूल बना देना, जब तक वो रूल नहीं होता तब तक हम चाहे अपनी मर्जी से करना है, बट एज सुन एज इट इज अ रूल, इट इज बाउंडेशन, देन वी बिकम, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम वाज, दैट डायलॉग ना कि हफ्ते में इतने 70 घंटे काम करना चाहिए। Narayan Murthy, he gave this statement that everyone should work at least these many hours. So for Narayan Murthy, it is like his love. The way हम्म। जो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, तो because he is doing out of his will, but as soon as it becomes a restriction, you force people, तब वो एक, एक वो नेगेटिव वाला दिमाग में चलना शुरू हो जाता है कि मेरा तो लाइफ बैलेंस नहीं बन रहा है और ये नहीं हो रहा है, और फिर उसमें नेगेटिव चीजें आपको दिखाई देने लग जाती हैं। नारायण मूर्ति को नहीं दिखाई दे रही है बिकॉज इट इज हिज फर्स्ट लव, ही इज डूइंग आउट ऑफ हिज पैशन। एंड मोर ओवर इट्स मोर तो सेम अबाउट है कि कि आप अगर जब, आप वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद है, द थिंग दैट यू आर लविंग, नॉट एवरीबडी इज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू डू दैट वर्क ना। Most of the people are doing some kind of a job only because they need to feed their family. They don't get to do something that they love. My एग्जैक्टली वो brother, पे चेक he आना was चाहिए बस। हाँ। exactly, my brother wanted to study, astronomy, and he is an engineer and he's working. अभी वो क्या करे? He loved physics. He wanted to do PhD in physics, but नहीं है। अभी वो कर रहा है ना जो कर रहा है, इंजीनियरिंग करियर जॉब कर रहा है। गिवन एन अपॉर्चुनिटी ही माइट, अगर तुम कहोगे कि जितनी वो तनख्वाह ले रहा है 5 लाख रुपया महीने का, अगर उसको घर में बैठे बैठे मिलता है, ही कैन परस्यू हिज ओन इंटरेस्ट, ही विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट अभी भी। बट ही हैज टू फीड हिज फैमिली, सो ही हैज टू गो एंड अर्न। राइट। अभी उसको कह दो कि 20 घंटे 15 घंटे पढ़ा तुम ये ही काम करो, तो ही विल बी लाइक पागल है क्या, मेरे मेंटल ब्रेक डाउन होने वाला है इसको कर। हाँ। राइट, वही ना, जिसको जो पसंद है, जिसका जो पैशन है, सो एज सुन एज बाउंडेशंस कम्स, कोर बिलीफ से हट गया, हमारे कोर बिलीफ से हट गया ना, वो मेरा कोर बिलीफ नहीं है, वो किसी और का है, किसी और का कोर बिलीफ मानना इज लाइक बर्डन टू मी। जब तक That's मेरा what I कोर said ना। बिलीफ है। That is why I say we are married to our own core beliefs only। हम्म। हमारे ओन बिलीफ सिस्टम और हमारी ओन वैल्यूज जो है उसके साथ हम मैरिड है। हमारे को उसके साथ का रिलेटेड तुम जो भी काम कहोगे हम सब बड़े खुशी से कर देंगे। खुशी से कर देंगे। मूवमेंट, हाउ वी से, प्यार से बोलोगे मैं सारा कुछ कर दूंगी, गुस्से से बोलोगे मैं नहीं करूंगी। राइट। राइट। बिकॉज दैट इज आवर बिलीव कि गुस्से से कोई बोल रहा है मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करता, मुझको नौकर समझा हुआ है। राइट। जिसको मिठाई बनानी पसंद है, जिसको खाना बनाना पसंद है, लाइक माय मासी, शी इज अ गुड कुक, शी इज एन एक्सीलेंट कुक, एंड शी लव्स टू कुक, and she loves to feed also. हाँ। And she'll invite people, come come come, आओ आओ परांठे खाएंगे, मैं बनाऊंगी ये वो, मतलब उनको ये बड़ा शौक है। तो उनको शौक है, उनके लिए ठीक है, जिसको शौक नहीं है उसके लिए सरदर्दी है। I know। वो बेचारा कहेगा कि यार अब ये मेरे घर आएगी तो मेरे को भी इतना सारा बना बना के खिलाना पड़ेगा। Well, all right, then we shall wrap this session. Tomorrow शाम को कौन सी बुक है अपनी? we are starting not today but tomorrow. Tomorrow is the 1st of April now. We'll start tomorrow. The ओके। power of intention is the one which has got the maximum votes. पावर ऑफ इंटेंशन। Have you heard of it? शायद पढ़ी है मेरे पास। Wow. पता है किताबें किसकी? मेरे पास सारी पढ़ी हैं, बहुत Is किताबें it's written पढ़ी हैं। by Dr. Wayne W. Dyer. It talks about ओके। learning to co-create your world your way. मैं तो अभी मेरी डॉटर का क्योंकि टुमारो इज द फर्स्ट, तो शी हैज वी हैव अलॉटेड हर 1,000 rupees फॉर एवरी मंथ शी कैन बाय बुक्स टू रीड। सो व्हाट शी डज इज दैट एक महीने हर महीने फर्स्ट से पहले शी हैज टू गो, उसको वो हो जाता है कि कल से तो स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, आज छुट्टी है, आज ही मॉल लेके चलो, मुझे तो बुक लेनी है। एंड आई वाज लाइक हाँ मुझको भी लेनी है। सिक मम्मी हम दोनों चले, मैंने कहा लेट्स टेक पापा ओके, एंड सो यू गोना बाय। यस, I'll buy and we shall start tomorrow. परफेक्ट। जैसे, ओके। ओके, बट आई ऑलवेज गेट इट फ्रॉम Amazon or maybe Snapdeal.
अभी उससे मैं मंगाऊंगी तो इट विल टेक 2 days. amazon का है ना 24 घंटे में डिलीवरी। है, फेक वैसे तो मेरे पास समथिंग, प्राइम भी हाँ है इट इज अमेजोन का. प्राइम के साथ है। हाँ प्राइम में है एटलीस्ट उनका अगर एक वहां से फीचर। हैंड ऑन हैंड मिल जाएगी तो गुड, नहीं मिलेगी तो फिर अमेजोन से गुड है, नहीं. बेस्ट है। हाँ राइट। ये भी मेरे को पढ़नी थी यार, इमोशनल इंटेलिजेंस, डैनियल गोलमैन की। व्हाट बुक इज दैट? आप लोग बताते ही नहीं. इमोशनल इंटेलिजेंस ना, डैनियल गोलमैन की। ओके, इमो दिखाने जरा कितनी मोटी बुक है. डैनियल गोलमैन। नहीं नहीं, हाउ मिरर थिक दिख इज रहा द है ना बुक? इसमें? नहीं, नॉट मच, नॉट मच। Thick is it's not that big. It has around 300 pages. ये मैंने ऐसे ही रेड लाइट पे से ही खरीदी थी। इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशनल एंड इंटेलिजेंस। I'll get that as well. अभी ये वाली बुक खत्म हो जाएगी तो मे बी वी कैन स्टार्ट आफ्टर मास्टर योर इमोशंस, वी कैन स्टार्ट विद दैट. ये अच्छा, मेरे फ्रेंड ने लिखी है। द बेटर इन ये एक यू. मेरे फ्रेंड ने लिखी है, द बेटर इन यू। वाओ, नाइस, ग्रेट. एंड हाउ ही इज गिफ्टेड मी दिस बुक रिसेंटली। मैंने पढ़नी शुरू ही नहीं की है। उसने मुझसे रिव्यू मांगे, मैंने कहा भाई अभी मत मांग तू। अच्छे टॉपिक्स छांटे हैं, जैसे इसने मी वर्सेस वी। आई मीन इट्स सो पावरफुल ना, मी वर्सेस वी। Why we lose self confidence, the opinion of others, rebuild self confidence। मतलब इसका कहना ये है कि मैंने प्रॉब्लम लिखी है और साथ साथ सॉल्यूशन भी लिखा है। गुड, नाइस. आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू राइट अ बुक. एक बुक लॉन्च हुई है जिसमें आई एम अ को ऑथर, बट अच्छा। Manish sir had started some initiative to help. हाँ उन्होंने 1000 दिन का किया है ना, Yes, 1000 days। 1000 नहीं है, 100 days है. 100 days, हाँ 100 days। और 3 साल लग जाएंगे 1000 days में। 3 साल नहीं लगाने, डेढ़ साल लगा के तो हमने अपनी जो को ऑथर करी है बुक विच वी लॉन्च रिसेंटली ना, अभी इवेंट पे ही लॉन्च करी थी, वो निकल आई 1.5 साल में. बट नाउ आई एम प्लानिंग टू राइट अ बुक ऑन माई ओन ऑन रिलेशनशिप्स. अच्छी बुक लिखी है यार इसने। हाउ टू चूज अ मेंटोर, मेंटोर बाय चॉइस, मेंटोर बाय फोर्स एंड मेंटोर बाय मेंटोर्स चॉइस। ऐसा भी तो होता यस. है ना? Accept your shortcomings, the right approach to accept your How shortcomings। big how और big is that book? How many pages is it? ऐसे ही 190 पेज हैं। Wow, nice. Short and sweet, huh? हाँ शॉर्ट एंड स्वीट। अर्ज टू ग्रो, फियर टू फेल। Good topics. बड़े। Very relatable topics, in fact. हाँ। आपने एक उसकी पढ़ी है, अमनदीप ठंड की, क्या है? द सीक्रेट ऑफ विनिंग? नहीं. भाई इस बुक को आप पढ़ोगे ना, सीक्रेट ऑफ विनिंग, आपको ऐसा लगेगा आपने 10 किताबें पढ़ ली हैं। Wow. हाँ। इसकी मैंने जो भी ये पढ़ी ना इसकी बुक, तो इसमें से बहुत कुछ था जो मैं पहले बुक्स में पढ़ चुकी हूँ। Okay. He has picked up the best of the things from the other books and he have kept it over here in his own book, Wow. The Secret of Winning। ये Nice. भी अच्छे हैं। Amazon पे भी है. द बेट यू को पढ़नी है, अभी बाकी है, इसको पढ़ के मेरे को उसको रिव्यू है। कौन सी वाली? ये The Secret of Winning. हाँ सीक्रेट ऑफ विनिंग तो है अमेजोन पे। ये मैंने अमेजोन से ही मंगाई थी। अच्छी बुक है ये। पर आजकल मेरे को बड़ा शौक चढ़ा है करिश्मा, वो गोपाल दास की बुक पढ़ने का। और गोपाल दास गौर की गोपाल का। कौन सी बुक हाँ पढ़ रहे हो? जबरदस्त है। लाके दिखाती हूँ लाइफ यार, कल आई है। इमेजिंग सीक्रेट्स पढ़ी थी मैंने. दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल. कौन सी? लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स. शायद। हाँ एक सेकंड में लेके आ। All right, we'll close the session here and we'll meet tomorrow.
at 2 p.m.